कि गुज़िश्ता सवा दो साल के दौरान फ़लस्तीन का जो हाल हुआ है, ख़ास तौर पर गज़ा शहर का, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और पूरी दुनिया में लोगों ने आवाज़ उठाई है। और उससे बढ़कर बहुत से लोग वो हैं जिन्होंने अमली तौर पर भी फ़लस्तीनियों की मदद की कोशिश की है। खाना पीना पहुँचाना तो ऑब्वियसली अहम था ही, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि फ़लस्तीनियों की नई नस्ल मुस्तकबिल के लिए तैयार हो और उनकी तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो निकल जाएं, जिंदा बच जाएं, मतलब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें, मतलब सर्वाइवल भी हो और उसके बाद कुछ फ्लरिश भी करें आगे जाके। ये बड़ा बहुत और बड़ा एक काम ऐसी एक तंजीम है टीम आई ग्लोबल जो फ़लस्तीन में बहुत सारे शोबों में काम करती है और इनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं और उन्होंने बहुत से तलबा को मुख्तलिफ ममालिक, ख़ासतौर पर पाकिस्तान भी एक मुल्क है इनमें, जिनमें भिजवाया। और ये काम कितना मुश्किल है क्योंकि पूरा एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है। कौन कौन से आलमी पार्टनर्स हैं जिनकी मदद से ये हो पाता है। टीम आई ग्लोबल से मरीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं और इन्हीं की मदद से हसन अली एक गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म हैं जो एक साल पहले इस्लामाबाद पहुंचे, इनको वहां से निकालना मुमकिन हुआ एंड नाउ ही इज कंटिन्यूइंग, ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड ही इज कंटिन्यूइंग his studies here in Pakistan and his creditors were transferred, so he is like literally continuing his education. I mean, that's a lot of work, frankly, but let us welcome them both on the show. Maryam Khan and Hassan Ali, welcome to Geo Pakistan. We'll start the conversation with Maryam though, because Hassan, obviously we want to know your story, but we want to know how it all happened that you got here. Maryam, आप हमें बताएं, आप हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रही हैं। ख्याल तो सारों को आता है लेकिन आपने कर लिया, किस तरह किया कि आप अगर किसी को मदद कर सकती थी तो एटलीस्ट एक शख्स को तो आप वहाँ से निकाल के आगे भेजें? First and foremost, I want to say thank you for having me here. This was a collective effort. It's a historical and deeply meaningful moment, Pakistan's decision to allow direct evacuations from Gaza into Pakistan. It took एक साल लगा पूरा ये pathway establish करने के लिए. Okay. Both सारे individuals, authorities, diplomats were involved in facilitating this evacuation. So it took almost a year to get this done. But alhamdulillah, we did. MashaAllah. And you know, this is not the only evacuation. You have done multiple medical evacuations as well. आप हमें बता सकती हैं अब तक कितने लोग आप मुख्तलिफ ममालिक में भिजवा चुकी हैं और ये जो पाथवे आपने इस्टेब्लिश किया है ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस बारे में भी आगे हैं। पूरी दुनिया में काफ़ी evacuations हो चुके हैं अभी तक। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने numerous evacuations किए हैं न्यूयॉर्क, अमेरिका में, different countries, UAE, EU. वो जो एक प्रोसेस है इस्टेब्लिश करना, सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। सो हमने कहा कि पाकिस्तान में को भी, because I'm from Pakistan, alhamdulillah, and I wanted to establish a pathway to Pakistan. There's extremely intelligent doctors in Pakistan and they provide extremely amazing services. And the issue is that across the world, there's not many evacuations taking place for certain criteria. And I'm very, very, very happy to say that now Pakistan has established this pathway to allow any criteria. So the very first that is step, indeed great to know. yes. The very first step, and certainly you and your team have worked really hard for this. But Hassan, we want to speak to you as well. First of all, you are most welcome in Pakistan. It's great to know that you've been here a year already and you are continuing with your studies. How much of a blessing, I would say, because there are so many people who are still stuck back home, and obviously necessarily nobody would want to leave, but the circumstances are just such that if you have to pursue your studies, if you have to progress, you really have to get out. So how was that feeling, Hassan, for you to be able to get out from there and come to Pakistan to continue your studies? Wa alaikum assalam. Thank you for having me here, and it's great to be with you. First of all, it's a mixing feeling, to leaving your family in Gaza. The rest of my family is still in Gaza, and alhamdulillah, finally I am here to complete my studies, which was stopped because of the war since 2 years.
and I'm here in my second home, Pakistani. All of them are welcoming to me, and it's very great to be here. Wonderful. Hassan, how difficult was it to get out, and finally reach to Pakistan? Because we know on the pathway there are Israeli authorities involved as well, different countries, different borders. And then there is a lot of documentation required. So did you get in touch with Mariam's team, or you were trying to get out, or you were trying to continue your education elsewhere in the world? How did this all happen? Yes, actually, it was, as Mayam said, many political and many sides and organizations and governments involved in my evacuation, especially Mariam. And I was every day in touch with her and her organization, and the Pakistani embassy in Jordan was also involved. And I'm very thankful for them also, because they received me from the Jordanian border, Palestinian-Jordanian border, and they bring me to the hotel and they on board. Actually, it was very tough, but alhamdulillah, it was final, alhamdulillah. Hassan, did you have a choice in where you want to end up, which country, where you want to go? Did you have a choice in that manner? For instance, obviously you wanted to continue your studies and you had to get those credits also transferred. So how did you make that happen in a very war situation? Actually, it was very long time that I working on it. It's not easy. Maybe it's easy for the other countries, but in Pakistan it took long time. It's more than a year just to do this in Pakistan. And because I know Pakistan, how much they are supporting Palestine, so for that reason I said I have to go there. And yeah, our love for Palestinians, our love for the people of Gaza is the world knows the world knows about it, and that's why you also chose to come to Pakistan. Hassan, you're here since a year now and you're continuing your education. Yes, बिल्कुल translate करें और मरियम से भी बात करेंगे. हसन कह रहे हैं कि जी बड़ा मुश्किल एक प्रोसेस था. पैलेस्टीनियन जॉर्डनियन बॉर्डर से मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी जो जॉर्डन में है उन्होंने रिसीव किया. वो भी एक बड़ा टफ टेरेन है, बड़ा मुश्किल. इसमें इजरायली अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं. सब ये प्रोसेस करने में इतना वक्त लग गया, महीनों साल लग गया ऑलमोस्ट. ये प्रोसेस है क्या, ये मरियम से जानते हैं. जी मरियम, आप ये प्रोसेस का भी हमें बता दें. और फिर अगर हम हसन का ही एग्जांपल ले लें, ना सिर्फ उनको वहां से निकालना, लेकिन फिर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में एनरोल करना ताकि वो आके अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, वो भी आप ही ने मैनेज किया था? नहीं, सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले आंसर करती हूँ. शिफा हॉस्पिटल शिफा यूनिवर्सिटी ने हसन को पहले एक्सेप्ट किया था. फिर उसके बाद डॉक्टर्स ऑफ रहमा UK based organization, they contacted me and asked me if I could provide them with the consultation on how the medical evacuations or any evacuations from Gaza are conducted. So I began doing evacuations almost 2 years ago from Gaza. And over this time period, my team have established these great connections, contacts with authorities, embassies, with all the people, the key players that are in charge in doing these evacuations and who give the approvals. After we obtain all the approvals from the key holders, that's when we had to then establish a pathway for Hassan to leave Gaza and come to Pakistan. Now, considering that Pakistan cannot evacuate directly from Gaza due to diplomatic ties and because there's no airport in Gaza, we had to get approvals from the Jordanian authorities as well. And I'm extremely appreciative to them because they are the ones that allowed Hassan to enter into Jordan and then from Jordan fly to Pakistan. अच्छा मरियम, आप हमें ज़रूर ये बताइएगा, ये बड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इसमें रुकावटें भी आती हैं, इसमें ऐसी भी अथॉरिटीज़ हैं जो प्रॉब्ली रोड़े अटकाती हों, जिससे हम कहते हैं रेड टेप्स लगा देती हों कि जी नहीं ये नहीं हो सकता. और हसन तो एक केस हैं. अभी ज़ाहिर है हज़ारों लोग वहाँ मौजूद हैं, कितने ही ऐसे सैकड़ों ऐसे बच्चे होंगे जिनको निकाला जा सकता है. So are there more cases which you are already working on? Are there more pending cases जो हम hopefully उम्मीद करें कि आने वाले चंद महीनों या हफ्तों में evacuate हो जाएं वहाँ से? आने वाले हफ्ते में तो नहीं, मगर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं. 19 स्टूडेंट्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं. हमने फर्स्ट स्टूडेंट का इस्टेब्लिश किया पाथवे क्योंकि टाइम फ्रेम का मसला था. हमें नहीं पता था कि कितना टाइम लगेगा. अगर हम
पेशेंट को पहले evacuate करते और उसको से सपोज करें जितना टाइम हमें लगा एस्टैब्लिश करने में हम उसकी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सक रहे थे you know, due to ethical reasons we cannot risk their life. We don't know the hurdles or the time frame, and we didn't know the exact date that, you know, we would have the evacuation process down. ताकि आगे भी obviously arrangement हुई हो, ये ना हो कि वो middle में आके फंस जाए कि आगे किस तरह लेके जाना है. Exactly. Absolutely, totally get that. Hassan, we want to come back to you because we are curious to know, now that the ceasefire has taken place, things are obviously not at all back to normal. A lot has to be done. But what are your plans? You want to continue your studies over here? When do you plan to go back, if at all? What do you have in your, you know, in your mind? Of course, a lot of missing to my country, Gaza, and inshallah, I wish once I finish my studies here, inshallah, I will go back to my country to rebuild the country, inshallah. Inshallah. That will be obviously a couple of years. 5 years. 5 years. 5 and years you know, studying is a lifetime. studying also. medicine is not easy like anywhere in the Are world. you, Hassan, are you in touch with your family? And friends? Yes, daily, yes, of course. And do you have friends who ask you that, all right, you are now settled in Pakistan? Yeah, bring us over as well. Yeah, do something for us as well. Actually, yes, I started to making friends since I came from the flight. The Pakistani people are very nice. Lovely, very nice. बड़ा अच्छा लग रहा है. हसन जो है ना, उनसे आप बातें भी कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं पाकिस्तान आके, और एक पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से मिल जाए, नथिंग लाइक इट. कि और हम सोच सकते हैं कितने ऑब्वियसली 1-2 सालों से हम भी गज़ा को कवर कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है. हमारा भी दिल इस तरह होता है कि किसी तरीके से जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए. एंड थैंक्स टू मरियम ये काम जो है ये हो भी रहा है. मरियम, ब्रीफली ये बता दीजिए, ये तो हसन तो स्टूडेंट हैं, ये यहाँ के आके पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या मेडिकल इवैक्यूएशंस भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी स्टेट ऑफ द आर्ट इलाज की सहूलतें मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान में हो रही हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं, कोई है प्रोसेस में? यस, तो ये स्टूडेंट पाथवे इस्टेब्लिश हो गया है. हमने कंफर्म किया कि ये सेफ है, ये बेस्ट है. कितना टाइम लगेगा, अब हम नेक्स्ट हमारा एवैक्यूएशन जो है पेशेंट्स का है इंशाल्लाह ताला. बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला विल इन्फॉर्म यू जब पेशेंट्स भी आएंगे, एंड दिस विल बी extremely ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर पाकिस्तान. Inshallah, I cannot, due to confidential reason, I cannot tell the date of exact evacuations. All right. But inshallah ta'ala, once the patients are in Pakistan, they will Inshallah. receive their health care. All the NGOs that are helping, including Al Khidmat, is playing a huge role in all of this. They're extremely supportive of facilitating these evacuations to Pakistan.